So, students, welcome back to the world of economics. And yes, agriculture sector, continuing with the same chapter, chapter number 8. Now, in the previous class, we studied about the problems that are related to agriculture, that is, the reasons behind the low productivity in the field of agriculture. And in this e-class, we will be studying about the measures to increase the agriculture productivity. Now, the introductory part says that low productivity of agriculture sector shows backwardness of agriculture. Yes, it shows that there is much scope of improvement in the field of agriculture. Agriculture, but natural, it needs improvement as it is the main occupation and very important pillar of Indian economy. Why and how it is important pillar, we have already started in the beginning part of the chapter. Apart from that, if agriculture productivity will increase, it is but natural that the income of the people in rural area will increase, and obviously if more of agriculture productivity is in the country, then the industrial sector and the service sector both will progress. And if there is development in each and every sector, then it is but natural that the country will also develop. It will also give solution of employment, urbanization, migration, and inequality of income. Yes, the problems will be, many problems will be solved. Now, to improve the productivity of agriculture, the steps should be taken, and the very first one is institutional measures, second technological measures, whereas the third one is other measures. And but natural that very first I start with institutional measures. Now, to increase agriculture productivity, economic planning has undertaken institutional reforms which would be favorable for economic progress of agriculture. Now, as we are studying about the measures to increase the agriculture productivity, it is obvious, it is natural that whatever we will be studying will be in favor of agriculture. It means the steps taken to see that the agriculture productivity increases. Now, in very first one, the institutional measure, very first one is land related reforms. Now, there was zamindari system, there was ryotwari system, mahilwari system, because of which the progress wasn't possible. So, law to abolish zamindari system to prevent the tillers and to control the rent are implemented in India, so that it provides ownership of land to farmers, and land laborers may have protection to till the land. Yes, law was passed in which the zamindari system was abolished, and yes, this was helpful to farmers and the laborers to stop the exploitation of farmers, and this way farmers may have big share of their crop. It is but natural, अगर जमींदारी सिस्टम जो था वो एबॉलिश हो गया, आई नो इट्स डन, वो एबॉलिश हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. और पहले जब हमने स्टडी किया था उसमें था कि फार्मर्स को बहुत ही कम शेयर मिलता है, मगर यहाँ पे क्योंकि सिस्टम एबॉलिश हो गया तो द शेयर फॉर फार्मर्स विल इंक्रीज. This may become cause to do more efforts to increase agriculture production. Overall, it may increase agriculture productivity. अब क्योंकि farmers को मालूम है कि maximum share उनको मिलने वाला है, तो बट नेचुरल है कि वो ज़्यादा एफर्ट्स लेंगे, ज़्यादा स्टेप्स लेंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो. नाउ द सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. वी ऑल नो दैट finance, money is required so that the farmers can buy the new technology, and so for that institutional credit was made available to them. Now, to provide the credit and other monetary facilities, nationalizations of bank was undertaken in our country.
Even National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, we have already studied about it, which is body, it is a part of RBI. It was set up in 1982, and over here, the special focus, the main aim was obviously agriculture sector and regional rural banks, RRB. It was focused on agriculture sector and regional rural banks and land development banks developed under it to provide cheap and enough credit to Indian farmers. Yes, RRB, that is regional rural banks and land development banks, were established, and the basic reason was to provide सस्ते में और इनफ क्रेडिट, जितना उनको चाहिए उस हिसाब से प्रॉपर अमाउंट में क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए इंडियन फार्मर्स को, सो दैट इट इज़ बट नेचुरल दैट एज दे विल बी गेटिंग द क्रेडिट इन इनफ अमाउंट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल increase. Let us move on to the next one. It is improvement in structure of agriculture marketing. Yes, over here improvement in structure of agriculture marketing. यहाँ पे improvement आएगा. Now, to overcome the shortcomings, that is the disadvantage of the system of agriculture marketing, many important steps have been taken. The very first one is regulated markets have been set up. Yes, रेगुलेशन के हिसाब से जो मार्केट्स चले वो बनाए गए हैं. द सेकेंड वन इज टू क्लासिफाई द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर देयर क्वालिटी. एगमार्क नॉट एट ऑल अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल. क्वालिटी को बताते हुए एगमार्क होना ज़रूरी है. द फुल फॉर्म इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. द थर्ड वन इज नेशनल वेयरहाउस Corporation and State Warehouse Corporation started to increase agricultural produce of farmers. Yes. Now over here, warehouses भी provide किए गए, not only at the national level but even at the state level. यहाँ पे उनको warehouses provide किए गए जहाँ पे वो access में जो production हो वो अपना store करके easily रख सकते हैं. The next point is systems have been developed to provide information about prices of agriculture produce. Yes, ये हम लोगों ने भी पिछले क्लास में किया था कि proper information नहीं होती है farmers के पास about the different things. For example, price, उनको पता नहीं होता है कि कितने price में actually market में उनका product जो है वो बिक रहा है, produce बिक रहा है. तो क्योंकि उनको knowledge नहीं होता है तो वो exploit हो जाते हैं. तो over here systems have been developed, इसकी वजह से उन्हें inform किया जाता है about the prices of whatever they are producing. The next and the last one is to protect farmers from market price changes, bottom price being announced by the government. Bottom price means this is the price that will be given to the farmers. Say for example, X price will be given to the farmers for sure. So that is known as bottom price जो है, that is announced by the government. Now let us move on to the next and last topic in institutional measures, which is agriculture research. Now we all know कि research जो है वो हर field में होती है. So it is but natural अगर हर field में होती है तो वो agriculture के field में भी researches होती हैं. अब क्योंकि researches यहाँ पे भी होती हैं, but farmers we all know they are less educated. तो उनके पास ये research का knowledge जो है वो कैसे पहुँचेगा? That duty has been allotted to NABARD. It does many researches. NABARD बहुत सारे researches करते हैं and it gives knowledge and training to the farmers about it. So farmers should not cultivate only with traditional techniques, but they produce as per rising demand and by that earn more income and start doing market oriented प्रोडक्शन. यस, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको नया नया टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम चले, कैसे यूज़ करना है, और फिर धीरे धीरे बट नेचुरल है वो जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उसको पूरा भी कर सकेंगे, उनका इनकम भी इंक्रीज़ होगा और वो प्रोडक्शन मार्केट ओरिएंटेड करेंगे. यानी कि मार्केट में डिमांड कितना है, कौन से प्रोडक्ट का है, किस तरह की क्वालिटी का है, तो वो अकॉर्डिंगली
प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चर उस प्रोडक्ट का ज़्यादा करेंगे. To include them in agricultural reform programs, collective rural development programs, Panchayati Raj integrated rural development programs, Jan Dhan Yojana, etc. started to modernize the agriculture sector to direct them for increase in agricultural productivity. Yes, the different programs were started in order to increase the agricultural productivity. Now let us move on to the next one, that is technological measures. Technological measures are equally important as the institutional factors, but over here it is that compared to institutional measures, technological measures are more easy and fast to give benefits. Comparison अगर हम करें तो technological factors जो हैं उनका जो रिजल्ट आता है, जो बेनिफिट्स आता है, वो इजी और जल्दी आता है. सो दीज चेंजेस हैव मोर इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज. यस, it is important. Now let us move on to very first one, that is improved seeds. Now improved seeds, hybrid seeds, we all know are developed by scientific inventions, but natural scientific inventions से ही hybrid seeds बनेंगे. These scientifically developed seeds give more production, helps in producing crops speedily. ये साइंटिफिकली डेवलप्ड होते हैं. ये जो हाइब्रिड सीड्स नहीं होते, जो नॉर्मल सीड्स होते हैं, उनसे हर तरह में हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, इम्प्रूव्ड सीड्स जो होते हैं, वो बेटर होते हैं एंड प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस. India has achieved a notable rise in food grain production with the help of these type of seeds. अब क्योंकि ये नॉर्मल सीड से प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर ये सीड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हुए भी हैं, इस वजह से जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. Therefore, extraordinary rise in food grains production is known at the place of agriculture revolution as a seed revolution. Yes, it's also known as a seed revolution. National Agriculture Research Committee, National Seed Corporation and agriculture universities give priority to seed development to increase agriculture productivity and reality. Now, over here we are given about the names. Very first one is National सीड कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी. नाम से ही मालूम चलता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सीड डेवलपमेंट को, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज हुई है. नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स. वी ऑल नो फर्टिलाइजर्स are important in order to increase the agriculture productivity. Use of agriculture chemical fertilizer increased with the use of improved seeds in India. क्योंकि improved seeds थे, साथ साथ में और भी प्रोग्रेस होने लगा, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो था वो भी इंक्रीज होने लगा. केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स give enough nutrition to plant and helps to grow rapidly. Yes, it provides nutrition जो कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Therefore, these fertilizers are very beneficial to increase the agriculture productivity. Nitrogen, phosphate, potash and other chemicals used as per crop. Yes, as per the need of the crop, the different chemicals, the different chemical based fertilizers are used. Chemical based fertilizers produced by public sector enterprises are also used in India. Even fertilizers are imported and distributed at lower rates. यानी कि हमारे कंट्री में भी बनता है, हम परचेज भी करते हैं दूसरे कंट्रीज से एंड आर प्रोवाइडेड एट द सब्सिडाइज्ड रेट्स. The next one is increase in irrigation facilities. Irrigation facilities are equally important, are much more important. As we all know, our country's agriculture is rainland. बारिश होती है अच्छी तो खेती भी अच्छी होती है, बारिश नहीं हुई
कम हुई या बहुत ज़्यादा हो गई, दोनों कंडीशंस जो है वो बुरी होती हैं। मगर जब बारिश अगर कम होती है तो या नहीं होती है, तो उस कंडीशन में इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। Indian agriculture sector depends on sky for rain purpose in majority cases, but rain is quite uncertain. So it directly affects agriculture production and productivity. India has one of big issues of agriculture, which is inadequate facility of irrigation. Yes, हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम हमेशा रही है. If agriculture has to come out from uncertainty of rain and to provide certainty in irrigation facility, then different motive of small scale and medium scale irrigation projects should be developed and this task should be prioritized. And so we want, अगर हमको चाहिए कि हमारा कंट्री में इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो उसके लिए हमें स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. To expand the service of irrigation, development program of irrigation sector and infrastructural development funds set up by India. Yes, इसके लिए funds भी set up हुए हैं, different programs भी, development programs भी बने हैं. In addition to that, incomplete irrigation projects and to develop other facilities, NABARD being assigned. Yes, so NABARD has got another work also कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं, आधे में रहे हुए हैं, उन्हें पूरा करने NABARD का काम होता है. Now let us move on to next one, which is use of machines. Machines we all know, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर यूज़ होता है तो काम जो है वो सिंपली, जल्दी और इजीली हो जाता है. One of the reasons for low productivity of agriculture is traditional equipments or machines. In reality, with the development of engineering and automobile sector, tractor, trailer, thresher, electric pump set, oil engine, pesticide sprinkler, pump, etc., modern machineries are invented. These machines are very helpful to have more than one crop a year, which increases productivity. It means, in short, we can say that if all these things are used, that is the sprinklers, the thresher, the electric pump sets, तो इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज होगा ही, मगर जो फार्मर्स पहले एक साल में एक ही क्रॉप उगा सकते थे, अब वो 2 क्रॉप्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज पेस्टिसाइड्स. रेडी क्रॉप हैज डेंजर ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स. यस, जो क्रॉप रेडी हो जाता है, मतलब उसे हम काटने के लिए जो रेडी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिजीज़ के एंड इंसेक्ट्स के. अब इसको दूर करने के लिए, टू प्रिवेंट द क्रॉप फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड टू प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, साइंटिफिकली डेवलप पेस्टिसाइड्स आर वेरी यूजफुल. यस, उसके लिए पेस्टिसाइड्स जो हैं वो काम आते हैं. इससे जो क्रॉप्स हैं वो हम इंसेक्ट्स से एंड डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. By using them, the loss of crop can be restricted, which also will give high productivity. The next one is soil testing. Soil testing is much popular in cultivation. With the help of scientific techniques, that test gives information about land. It means it is land favorable to crop or not can be known by the test. Now, suppose करो अगर फार्मर को बाजरा उगाना हो अपने खेत में, और अगर वो सॉइल टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उसको मालूम चलेगा कि वहाँ पे बाजरा जो है वो उग सकता है कि नहीं, और वो नहीं तो कौन सा क्रॉप उगेगा जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड ऑब्वियसली इनकम भी इंक्रीज होगी. सो over here, land favorable to crop or not can be known. Even it gives information of deficiency of elements of soil. Yes, soil में बहुत सारे elements होने चाहिए जिसकी वजह से crop production increase हो. तो अगर deficiency हो, कोई चीज़ की कमी हो, तो वो भी testing से मालूम चल जाता है. That helps to remove the deficiency of land. Yes, फिर accordingly उसमें
चेंजेस लाए जाएंगे, लैंड को इम्प्रूव करने के स्टेप्स लिए जाएंगे, एंड द प्रोडक्टिविटी कैन बी increased. This way, land can be made favorable to crop and it becomes capable to give high productivity. This test answers about favorability of land for crop or not so. Yes, इस टेस्ट से हमको मालूम चलता है कि कौन सा क्रॉप उगाना उस पर्टिकुलर लैंड पे सही होगा, एंड डेफिशिएंसी के बारे में भी मालूम चलता है. So students, yes, no doubt I'm done with my today's e-class, but I'll continue with the same topic, that is measures to increase agricultural productivity, in my next e-class also. So yes students, bye bye, and take care of yourself.